Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, first year. This is your English teacher Aisha. In today's lecture, we will be discussing poem number 8, Ozymandias, written by P.B Shelley, P.B Shelley. P.B Shelley is a romantic poet. He has written a lot of lyrical poetry and a few ironic poems, one of which is included in your poetry in your syllabus. Irony means to criticize something, किसी चीज़ पे तंज करना, तनकीद करना. तो इस पोइम में वो किस बात पे तनकीद कर रहा है ये हम पोइम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा. Don't be confused with the title Ozymandias. It is basically the name of a king about whom the poet is talking in this poem. Before beginning the poem, I want you to open your notebooks along with your books so that you will be able to jot down all the difficult words, their meanings and synonyms. I am thinking that you will find a lot of new vocabulary in this poem, so get excited. सबसे पहले तो I want you to know about the brief summary of the poem. In this poem, the poet is talking to a traveler. He is saying that he has met a traveler who told him about a broken statue. Throughout the poem, he gives us the description of that statue, how the statue was laid in a desert. And there is also a moral lesson by the end of the poem that we will discuss along with the lines. I am going to begin with the first line. And along with the lines, I will also discuss the meaning of the difficult words. I met a traveler from an antique land. Antique means ancient, old, बहुत पुरानी, बहुत कदीम. The poet is saying that he has met a person who has come from a journey of an ancient land. Poet एक मुसाफिर से मिला है जो कि बहुत कदीम किसी जगह से सफ़र करके लौटा है. Who said two vast and trunkless legs of stone stand in the desert. वो अब उसको क्या बता रहा है पोइट को कि he has seen two vast means बहुत बड़ी, huge, वसी, and trunkless without the upper part of the body. धड़ के बगैर उसने दो टांगे देखी हैं जो कि स्टोन की बनी हुई हैं, पत्थर की बनी हुई हैं. स्टैंड इन द डेजर्ट, जो कि सहरा में मौजूद है. सहरा के बारे में आप सब जानते होंगे कि सहरा में दूर दूर तक आपको रेत नज़र आती है. यू कैन नॉट सी वाटर, यू कैन नॉट सी प्लांट्स और एनी सॉर्ट ऑफ लाइफ इन अ डेजर्ट. तो कहीं दूर दराज सहरा में, किसी एक कदीम इलाके के सहरा में एक स्टैचू की दो टांगे खड़ी हुई उस मुसाफिर ने देखी हैं, जिसके बारे में ही इज़ टेलिंग टू द पोइट. नियर देम ऑन द सैंड हाफ संक अ शटर्ड विजाज लाइज. अब उन दो टांगों के करीब क्या है कि उसने बताया कि रेत के अंदर, सैंड रेत के अंदर, हाफ संक आधा डूबा हुआ, हाफ ड्रॉन. संक मीन्स डूबा हुआ, इसका सिनोनिम होता है ड्रॉन, DROAWN. अ शटर्ड विजाज, शटर्ड ब्रोकन, टूटा हुआ, बिखरा हुआ या टूटा हुआ इसका मतलब होता है. विजाज फेस, लाइज पड़ा हुआ है. क्या हुआ है कि अब उसने जो दो टांगे खड़ी हुई देखी हैं स्टैचू की, उसका जो फेस है इट इज़ लाइंग ऑन द सैंड. वो टूटा हुआ, गिरा पड़ा है रेत के ऊपर, जो कि आधा जो है वो रेत के अंदर ही डूबा हुआ है. Whose frown and wrinkled lips and sneer of cold command tell that its sculptor well those passions read. अब now the poet is talking about the facial expression of that visage. जो उस स्टैचू के चेहरे पे जो एक्सप्रेशंस हैं उनकी वो बात कर रहा है. फ्रॉन एन एक्सप्रेशन ऑफ एंगर, गुस्से का तासुर है उस चेहरे पे, गुस्से के जो एक्सप्रेशंस हैं वो मौजूद हैं.
एंड रिंकल्ड लिप्स, रिंकल्ड क्रीज्ड, झुर्रियाँ पड़ी होना, उसके जो होंठ हैं वो रिंकल्ड हैं और उसके चेहरे पे एक गुस्से का तासुर मौजूद, एंड स्नेयर ऑफ कोल्ड कमांड, और बहुत ही गज़बनाक और सर्द किस्म का तासुर जो है उसके चेहरे पे मौजूद है। कमांड मीन्स डोमिनेशन, हुक्म वाला जो तासुर है वो उसके चेहरे पे मौजूद है, जो चेहरा ज़मीन पे गिरा पड़ा है। टेल दैट इट्स स्कल्प्टर वेल दोज पैशंस रेड, कहता है ये जो इतने अच्छे एक्सप्रेशंस उसके स्टैचू के चेहरे पे नज़र आ रहे हैं, ये हमें ये बताते हैं कि द स्कल्प्टर हु हैड मेड दैट स्टैचू, स्कल्प्टर उस शख्स को कहते हैं जो स्टैचू बनाता है, द मैन हु मेक्स द स्टैचूज इज़ नोन एज स्कल्प्टर, हैज़ अंडरस्टूड दोज पैशंस, पैशंस एमोशंस, एहसासात, जज्बात, उसने उन एमोशंस को बहुत अच्छे से समझा और फिर उसकी वजह से उनको समझने के बाद उसने बहुत अच्छी सी उसकी जो है वो उसको पोर्ट्रे किया है उसके फेस पे स्टैचू के। So the poet is admiring the art of the sculptor. The poet is admiring the way the sculptor has defined the passions on the face of the statue. Which yet survive. वो कहता है अभी भी इतने अरसा गुजरने के बाद जब वो स्टैचू बना है उसके बाद आज तक उसके फेस पे वो एक्सप्रेशन जो है वो अभी भी ज़िंदा हैं, अभी भी वो देखे जा सकते हैं कि वो एक्सप्रेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हैं। स्टैम्प्ड ऑन दीज लाइफलेस थिंग्स, और कहता है वो अभी एनग्रेव्ड हैं, छपे हुए हैं, चस्पा हैं। स्टैम्प मीन्स एनग्रेव्ड, छपे होना, प्रिंट होना। ऑन दीज लाइफलेस थिंग्स जो ये स्टैचू की चीज़ें हैं इन पे अभी भी वो सारे एक्सप्रेशंस अभी भी छपे हुए हैं। इतने अच्छे आर्टिस्टिक वे में उस स्कल्प्टर ने इसको बनाया है। द हैंड दैट मॉक्ड देम, नाउ ही इज़ टॉकिंग अबाउट द हैंड, दिस इज़ द हैंड ऑफ द स्कल्प्टर, दिस इज़ द हैंड ऑफ दैट स्टैचू मेकर, उस मुजस्मा साज के हाथ की वो तारीफ़ कर रहा है जिससे उसने मेहनत से वो बनाया है, जो आज भी उसके एक्सप्रेशंस को सही से दिखा रहा है। दैट मॉक, द वर्ड मॉक मीन्स फनी, एंड अनदर मीनिंग ऑफ द वर्ड मॉक इज़ टू कॉपी, किसी चीज़ की नकल करना। तो कहता है जिस तरह उसने असल में किंग के फेस पे वो एक्सप्रेशंस देखे उस तरह से उसने उनकी नकल की है ऑन द स्कल्प्टर, उनकी वो तारीफ़ कर रहा है। सॉरी, स्कल्प्टर कह रही हूँ, ऑन द स्टैचू। एंड द हार्ट दैट फेड, एंड ही इज़ ऑल्सो praising that heart. This is the heart of the king who has created, who has expressed those expressions on the face of the king. Next line. And on the pedestal these words appear. Pedestal, base, platform, बुनियाद, जो नीचे वाली जो बेस है उस स्टैचू की, उस पे कुछ अल्फाज लिखे हुए हैं और वो क्या अल्फाज नज़र आ रहे हैं वो क्या हैं। माई नेम इज़ ओज़िमेंडियास, किंग ऑफ किंग्स, लुक ऑन माई वर्क, ये माइटी एंड डिस्पेयर, नथिंग बिसाइड रिमेन्स। अच्छा, अब जो उसकी, पहले हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। जो उसकी दो लाइनें उसकी पेडिस्टल पे, उसकी बुनियाद पर, उसके पायदान पर लिखी हुई हैं उस स्टैचू की। माई नेम इज़ ओज़िमेंडियास, वो जो किंग है उसने उसके ऊपर लिखवाया हुआ है कि मेरा नाम जो है वो ओज़िमेंडियास है, किंग ऑफ किंग्स। हेयर द किंग इज़ एड्रेसिंग द अदर किंग्स ऑफ द वर्ल्ड. These lines are showing the proud, the arrogance of the king Ozymandias. वो कहता है कि Ozymandias कहता है मैं तो बादशाहों का भी बादशाह हूँ। बेसिकली वो गरूर कर रहा है कि मैं इतना ज़्यादा ताकतवर हूँ। लुक ऑन माई वर्क्स, वो कहता है मेरे कामों की तरफ देखो। ये माइटी, ये is an old English word. This is no longer in use these days. ये means you. Mighty, बहुत बड़े, ह्यूज, बहुत ज़्यादा साइज़ में कोई चीज़ बड़ी हो। वो कहता है कि इतना मैं ताकतवर हूँ। इट इज़ ऑल्सो शोइंग द स्ट्रेंथ ऑफ द पोएम, स्ट्रेंथ ऑफ द किंग। ही सेज के आई एम द किंग ऑफ द किंग्स, आई एम द मोस्ट
strongest person in this world, and I am strong than all the kings of the world. And he has done a lot of work about which he is talking. Despair means na उम्मीद होना, मायूस होना. He is talking to the kings that आप लोग ये सब मेरे काम देख के मायूस हो जाएंगे, आप लोग अपने से मायूस हो जाएंगे कि आप लोगों ने खुद कुछ नहीं किया. तो बेसिकली द किंग इज़ वेरी प्राउडी. Maybe he has done a lot of good works, but he is very proud at his achievements. Now look at the next lines. Nothing beside remains round the decay. वो कहता है कि अब उस वक्त, अब यहाँ पे आयरनी शुरू होती है. The king was very strong, the king was very powerful when he was alive. He got his statue made and he got these words engraved on his pedestal. These words again show his arrogance. But now, आज के दिन में क्या है? There is nothing there. His works are no more there, and there are no other people to praise them. The statue is lying in the desert where you cannot see population. People are not admiring. Everyone has forgotten him. कहता उसके पास कुछ भी मौजूद नहीं है. Round the decay. Decay, destroyed, कोई चीज़ गल सड़ जाए, रून हो जाए, कोई चीज़ बिल्कुल तबाह हो जाए, ख़त्म हो जाए. Of that colossal wreck, colossal, very big, huge, wreck, तबाहशुदा, ruin चीज़ हो तो उसको हम कहते हैं wreck. Boundless and bare, कहता है उसके इर्द गिर्द अब इस वक्त कुछ भी मौजूद नहीं है. Boundless, with this word boundless, कि जिसकी कोई हदें नहीं है. Without boundaries, कहता है उस सहरा में दूर दूर तक कुछ भी नज़र नहीं आ रहा. इस वक्त वहाँ पे कोई मौजूद नहीं है. उसका ना कोई काम, ना कोई लोग जो उसको एडमायर करें, उसको प्रेज करें. बेयर, खाली है इस वक्त ये सब. द लोन एंड लेवल सैंड्स स्ट्रेच फार अवे. ओनली यू कैन सी सैंड फॉर लॉन्ग एंड लॉन्ग डिस्टेंसेस. कहता है दूर दूर तक सिर्फ आपको रेत ही रेत नज़र आ रही है और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा. सो once again I will explain the poem. The poet is talking to a traveler who has come from an ancient or antique land, and he is telling the poet about a destroyed, a broken statue of a king who was very proudy, who was very arrogant in his time, and he was addressing to the kings of the world that he has done a lot of great works and he has a lot of power and authority in his time. But now the irony is everything is destroyed, everything is ruined, even his statue is not intact, everything is broken, and there is no one to admire him, there is no one to recognize his work. So basically the poet is giving us a moral lesson. God does not like proud. Allah हमसे तकब्बुर गरूर पसंद नहीं करता. If you are successful in your life, you should not be proudy on whatever the achievements you have. If you will be humble on your successes, you will be remembered by the people. People will never forget you. लेकिन अगर आप प्राउडी हैं, अगर आप मगरूर हैं, तो eventually everyone will forget you and your result will be similar to this स्टैचू कि आज वो सहरा में पड़ा हुआ है और कोई भी मौजूद नहीं है उसको देखने के लिए. Today we didn't discuss the form of the poem because this poem is not written in the form of stanzas. This is just a long, thorough poem. A few lines are rhyming. You can find the rhyming words on your own. Now I want you to find out the rhyming words and tell me tomorrow whether there are few words rhyming or not. अब हमने पिछली 3 पोइम्स में राइमिंग वर्ड्स कर लिए हैं. अब आप मुझे निकाल के बताएंगे राइमिंग वर्ड्स के बारे में. This was it for the explanation. Now we come to the theme. I want you again to read the theme on your own and take out a little context that you will be learning for your question of explanation with reference to the context. Then we have paraphrase. You should also read the paraphrase twice or thrice so that
you will be easily writing your explanations. ग्लॉसरी हमने ऑलरेडी सब डिफ़िकल्ट वर्ड्स रीड कर लिए हुए हैं. उसके बाद आ जाते हैं जी इसकी एक्सरसाइज पर. चूज़ द करेक्ट आंसर. द ट्रैवलर सा अ डैश, स्नेक, स्टैचू, camel, water. So the traveler saw what? He saw a statue. The poet met a dash, traveler, sailor, beggar, captain. He met a traveler. Come to the next page. His name was written on the dash, face, body, pedestal, wood. His name was written on the pedestal. The wreck of the statue was dash, colossal, small, big, little. The wreck was colossal. Mark the statements true or false. The traveler belonged to an ancient country. True. The traveler saw nothing in the desert. False. Nothing was written on the pedestal of the statue. False. Ozymandias was a prince. No, he was a king. It's also false. Add 2 more rhyming words to each word given below. Land, you can add a lot of rhyming words to it. Sand, band, stone, bond, dawn, decay. अब ये आगे वाले जो 2 words हैं, I want you to make rhyming words of these and tell me tomorrow whether you have find rhyming words of next 2 words or not. That these words are decay and fed. It is very easy. Next question, write down the missing words in each verse. The traveler from an, I met a traveler from an antique. The right option is land. 2 vast and trunkless legs of stone stood in the dash. In the desert. Right option is desert. My name is Ozymandias. King of kings. Right option is kings. Of that colossal wreck, boundless and dash. Right option is bear. Next question is give a summary of the poem. This is not relevant to Lahore board. You don't have long questions in your paper pattern, so we are skipping the summary. Otherwise you can read the summary from the grammar. It will help you in doing the explanation of the poem. What kinds of feeling does the poem create in the reader's mind? The answer of this question can be addressed in various ways. आपके दिमाग में इस पोइम को पढ़ने के बाद क्या फीलिंग्स आती हैं, इट्स अप टू यू टू राइट. मे बी you are horrified with the explanation of the statue. That is the end of a very powerful person. The reader can be upset with the end of a powerful person who is arrogant. The reader must have the feelings of horror or depressing feelings. If you are proudy, eventually your name will be forgotten and even your statue will be broken in future. तो इस तरह की कोई भी आंसर आप लिख सकते हैं कि आपको ये पोइम पढ़ने के बाद आपके दिमाग में क्या फीलिंग्स आई हैं. आपको डर लग रहा है, आप